Namaste. Hello everyone. This is Dr. Kriti Shukla from Smilocare Orthodontic and Implant Center, Kanpur, and I'm back with a new video. So welcome to Dr. Kriti's Dentistry, and here is my new video on the topic orthodontic treatment या दांतों का तार. So what is orthodontic treatment? It is usually comprised of braces or brackets which are being applied on the tooth or teeth and tightened with a wire in order to bring out the tooth movement so that their position can be corrected. So अगर मैं इसे और विस्तार में समझाऊं तो हम दांतों पे जो ब्रेसेस या ब्रैकेट्स लगाते हैं और उनको एक तार की सहायता से कसते हैं ताकि दांतों को अपने करेक्ट पोजीशन पे लाया जा सके या उनकी पोजीशन से उन्हें मूव किया जा सके. So now what is the requirement of orthodontic treatment? हम किन केसेस में orthodontic treatment या दांतों का तार लगाते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है malposition tooth, यानी जिनके दांत आगे की तरफ निकले हुए होते हैं या आगे पीछे होते हैं, दांतों की पोजीशन करेक्ट नहीं है, उनके में हम दांतों का तार यूज करते हैं. सेकेंडली मैल अलाइंड टूथ, जैसे कि जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं अगेन. thirdly then comes the tooth spacing, जिनके दांतों के बीच में अनवांटेड गैप होता है, अनचाही जगह होती है. उन केसेस में हम दांतों की पोजीशन चेंज करके उनको करेक्ट पोजीशन पे लाते हैं. Then some people they suffer from poor oral hygiene because of these malpositioned or malaligned tooth. Usually अगर दांत आगे पीछे या टेढ़े मेढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं दांतों की सफाई उससे इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से ब्रश करते समय यूजुअली दांत प्रॉपर्ली साफ नहीं हो पाते. और कुछ लोगों को यूजुअली ये प्रॉब्लम होती है कि मेरे दांत में कैविटीज या केरीज क्यों हो रहा है. तो कहीं ना कहीं अगर दांत साफ नहीं हो पाएंगे देयर बी इंक्रीज्ड ओरल प्रॉब्लम्स. So in these cases there are in order to reduce the oral problems also we apply braces or brackets, and then again inadvertently it will lead to improve eating habits, right? हमारे दांतों की जगह ठीक होने से उन कहीं ना कहीं हमारे दांतों के चबाने की क्षमता भी बढ़ती है. And then coming on to reduced tooth grinding, कुछ लोगों को दांतों की malposition या दांतों के टेढ़े मेढ़े होने की वजह से दांत पीसने या चबाने की आदत भी हो जाती है. So usually that is also reduced. Reduced tooth grinding also takes place by orthodontic treatment. So these are some indications, some points why we should go for orthodontic treatment. What is the need of orthodontic treatment? कई लोगों के ये सवाल होते हैं कि हमारे दांत बाहर निकले हैं या हमारे दांतों के बीच में गैप है, तो क्या हमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए? तो बेटर यू गो फॉर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, क्योंकि इसके पॉजिटिव्स ये हैं कि इसका जो एक बार चेंज आता है, जो दांत की पोजीशन में करेक्शन आता है, इट इज परमानेंट, इट इज फॉर द लाइफ टाइम ऑफ यूज. पूरी जिंदगी वो ट्रीटमेंट का चेंज, दांतों की करेक्ट पोजीशन लंबे समय तक बनी रहती है बजाय अन्य ट्रीटमेंट्स के. सो नाउ कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ ब्रेसेस भी कई प्रकार के आते हैं. इट इज यूजुअली द मोस्ट कॉमन वन व्हिच वी ऑल सी आर द मेटल ब्रेसेस. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ब्रेसेस इन ऑर्थोडोंटिक यूज्ड इन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट इज यूजुअली मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, एंड यूजुअली दे आर कॉस्ट इफेक्टिव and they're very popular. Then second category are the ceramic braces, the braces which are usually not seen. These are tooth color braces. You cannot see the braces visually, and the only slight bit of wire is seen in that. These are usually less visible. Then coming on to, there also colored braces are also available, like whatever the modules or the elastics that we apply upon the braces, these are colored in nature. Then we have one new category, or the special category, that is the lingual braces. Braces again, because वो दांतों के पीछे लगाए गए हैं, they are not visible from outside and they are fitted at the back of the tooth.
Then one of the categories also include gold braces which are made up of gold, usually kind of these are more expensive and just for more for show purposes, right? Then we go for one of the most newer category of orthodontic treatment includes the invisible aligners, which we have usually known through various social media sites or various Google websites. So what we see are the aligners, in which the impression of the patient is taken and the customizable aligners are applied, they are given to the patient. They can wear it, they can remove it, and these are the very newer category of orthodontic appliances. Then also these are so these were the basic category of braces which I told you. Then what is the treatment plan? How do we go for orthodontic treatment? So first of all is, when patient comes to us saying that we have this problem and we decide to go for an orthodontic treatment, so what is the first basic thing we require is the OPG, जिसे हम बड़ा वाला X-ray बोलते हैं. We usually advise the patient to get an OPG for us, and then after that we go for the impression of the patient. हम patient के दांतों का एक नाप लेते हैं. We get the cast, and then we see whatever the change is to be brought, or जो भी हमें patient के हिसाब से दांतों की position करनी होती है, we decide the treatment plan accordingly. Then patients usually ask what is the doctor टाइम कितना लगता है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में. सो सी द टाइम ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यूजुअली डिपेंड्स अपॉन केस टू केस. किस पेशेंट में कितना चेंज लाना है, दांतों की पोजीशन कितनी चेंज करनी है, दैट टाइम डिपेंड्स अपॉन द केस पर्टिकुलरली. यूजुअली इट टेक्स up to 1 year whenever there is minimum to minimum correction, and it can extend up to the time we need the proper positioning of the tooth. जब तक दांत अपनी जगह पर आ ना जाए, पेशेंट का एस्थेटिक या पेशेंट का चेहरा, उसका जो भी पेशेंट का चेहरा ठीक ना दिखने लगे. So usually people also say that मेरे lips close नहीं होते. There is lip incompetency because of the malocclusions. So one of the things that I want to mention here is that we have 3 categories of malocclusion. 3 तरीके की categories, basic categories हैं जिन्हें हम malocclusion बोलते हैं. These are like class 1 malocclusion, class 2 malocclusion, class 3 malocclusions. Then class 2 usually include कि जिसमें हमारा ऊपर का जो जबड़ा है वो ज़रूरत से ज़्यादा बाहर होता है, और class 3 is जिसमें हमारा नीचे का जबड़ा, the mandible is forwardly placed, ज़रूरत से ज़्यादा बाहर होता है. तो ऐसे cases में usually patient there is lip incompetency also, patient का lips proper close नहीं होते, and then obviously this goes into this disturbs the facial aesthetic of the patient. So that is also a very very important point to be taken care of in orthodontic treatment. भाई patient करा ही orthodontic treatment इसलिए रहा है because we need the correction of the facial aesthetics. Then what is the cost of orthodontic treatment? It usually depends upon the what are the changes we need to apply on the patient, what is the time that will be taken off, कितना समय लगेगा, क्या changes करने हैं, उसके हिसाब से the cost is also decided. So, and it depends upon the types of material we are using on the patient. So that is completely patient dependent. The time and the cost both are patient dependent factors. Then coming on to what we do is that we apply normal braces on patients, and then we use wires to tighten that braces along with the modules or the elastics, and whatever the type of correction is to be brought, हम उसको change में लाते हैं. Then so one of the most important question also arises कि हम दांतों का तारे orthodontic treatment कब ले सकते हैं. So the most important question, the answer to this is कि जब हमारे मुंह में सारे permanent दांत erupt हो चुके होते हैं, all the permanent tooth or teeth have erupted. That is usually around the age of 12 to 13 years.
आफ्टर दैट वी कैन गो फॉर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। 12 से 13 साल की उम्र के बाद ही हम दांतों के तार के ऑप्शन पे जाते हैं, क्योंकि तब तक सारे दांत आ चुके होते हैं और द पोजीशन हैव बीन डिसाइडेड, एंड आफ्टर दैट वी गो फॉर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट and up to 40 years of age. Okay, the most important factor is the care that we have to take during orthodontic treatment. सब ठीक है, सब करा लिया, ब्रेसेस लग गए, वायर लग गया, एवरीथिंग गॉट डन। अब हमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के दौरान क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सो योर डेंटिस्ट वी यूजुअली प्रिस्क्राइब द फ्लोराइड टूथपेस्ट टू बी used, because जो भी हमारे दांतों पे ब्रेसेस लगे हैं, they require some kind of fluoride is required to maintain the healthy tooth structure. Then we should use interdental brush. Special brushes are made for orthodontic treatment. Orthodontic treatment के लिए special brushes आते हैं. So usually क्या होता है कि जब braces लगे होते हैं दांतों पे, so the cleaning has to be effective also. So दांतों braces के बीच का जो brushing है, for that we have special orthodontic brushes available. Then usually to avoid sports during orthodontic treatment, because the tooth जो हमारे दांत हैं वो एक moving position, एक unstable position में है, so they can be affected during direct contact sports. And usually to avoid sweets, because usually क्या होता है कि already sensitivity कहीं ना कहीं patient के मुंह में दांतों में होती है, so avoid sweets. And also the most important point is to visit your dentist regularly in order to get a check on your orthodontic treatment. According to the particular time, the things has to be changed or things has to be corrected of, so there is a proper visit to the orthodontist. Also after orthodontic treatment के बाद भी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, that you have to visit your dentist regularly, and you need to go for a proper scaling and polishing just after the orthodontic treatment. Whatever the composites are left over on your teeth, they need to be removed, and you have to maintain your oral hygiene, because that is the proper rule of having your tooth or teeth healthy. And you have to go for and one of the most important point is that after orthodontic treatment we require retention plates, which are very important to maintain the change that we have brought during orthodontic treatment. Orthodontic treatment के समय हमने जो भी change लाया है दांतों में, that because दांत मूव हुए हैं, तो कोई भी चीज एकदम से मूव होती है, it requires time to get stable at that position. So उसको उस position में stable आने के लिए it requires 5-6 months. So we usually prefer the patient to apply your retention or retention appliances, which usually they can be removable appliances. Plates होती हैं which can be applied and removed by own, and they can be fixed retention appliances also, wire which is fixed on your tooth to avoid tooth movement. Then we have invisible appliances also, which can be applied and they can be placed and removed by your own. So these are very important to retain that, because the name suggests retain, right? Retain that particular tooth movement that was brought to you, and to get that stability lifelong. यूजुअली पेशेंट्स का ये कहना होता है कि डॉक्टर साहब हमने लगवा तो लिए थे तार, बट अभी दांत मेरे वापस बाहर आ रहे हैं. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज व्हेन पीपल और द पेशेंट्स दे डू नॉट यूज द रिटेनर्स, either they do not take their retainers or they do not apply their retainers properly. So both the applying and the time of applying is important. So this was my take on orthodontic treatment. दांतों के तार के बारे में क्या क्या आपको जानकारी होनी चाहिए, this was ये मेरे विचार हैं. And and recently I completed 1 year of my clinic SmiloCare, and so I found it necessary to let you know about orthodontic treatment. So I'll be back again with a new video on a new topic, new refreshing topic. So till then, stay safe, stay happy, stay healthy, keep smiling, because in SmiloCare, your smile is our priority and we will smile together. Okay, bye bye. Take